वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चालू किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन विच हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स कंसिडर अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। कंसिडर a car moving at 40 km per hour इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। वेलोसिटी दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। This is the x-axis and this is the y-axis. In x-axis we are taking time, which is in hour, and in y-axis we are taking velocity, which is in kilometer per hour. So velocity दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कवर कर रहा है। दैट मीन्स एक्सीलरेशन इज जीरो। सो यहाँ पे एज द टाइम इज पासिंग द वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग। सो व्हाट वी कैन से? we can say its graph will be a straight line parallel to the x-axis। ये 40 है। This is the velocity time graph for uniform motion of the car. Since the motion is uniform, this is the velocity time graph for a uniform motion of car। Since the motion is uniform, so acceleration velocity since the motion is uniform, that is velocity is constant, so acceleration is zero। Now we know that velocity is equal to displacement by time। Sorry, velocity is equal to displacement by time। Velocity is equal to displacement by time। So displacement is equal to velocity into time। वेलोसिटी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम t। तो इफ अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है t1
एंड t2 के बीच में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 इंटू t2 माइनस t1। ग्राफ में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल at time t1 this is given, find the distance covered by the object between time t1 and t2. Let's take a, b, c and d. सो डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी 40 दिया हुआ है, टाइम, इस टाइम को हम लोग लेंगे t2 माइनस टी वन, तो वही हम लोग ले रहे हैं। t1 और t2 का जो डिस्टेंस है वो t2 माइनस टी वन ले रहे हैं। इस चीज से हम लोग एक चीज डिड्यूस कर सकते हैं। हम लोगों ने जो वेलोसिटी इंटू टाइम लिखा है ना, वेलोसिटी है, इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। 40 क्या है, 40 AD है, दिस AD लाइन इज 40 AD इंटू t2 माइनस टी वन क्या है, DC है, AD इंटू DC, एंड दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हियर लेंथ इज AD and breadth is DC. So area of rectangle is AD into DC. From this we can deduce an important learning, that area under the velocity time graph gives displacement. Area under velocity time graph gives displacement. इसको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, एक ग्राफ दे दिया जाता है और बोला जाता है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement. And in the last स्लाइड में हम लोगों ने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। In uniform motion the velocity was constant and since the velocity was constant, acceleration was 0. But what if acceleration is not 0? इस कंडीशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? Let's take a car
मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम लोग जो 9th क्लास में पढ़ेंगे वहां पे एक्सेलरेशन in most of the questions would be constant, acceleration would not be variable. Okay, so let's take an car. Let's take an example of car. Which is moving with a constant acceleration a. Okay, this is the x-axis, this is the y-axis. In x-axis we are taking time in seconds, and in y-axis we are taking velocity in meter per second. Since the object is accelerating, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। And here the object is in uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? द वेलोसिटी इंक्रीज इन ईच टाइम इंटरवल इज इक्वल। Velocity increases by equal amounts. In equal intervals of time. इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हम लोग को लीनियर यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिला था उसी प्रकार से हम लोग को ग्राफ मिलेगा। हियर वी कैन सी एज द टाइम इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी इज also इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम लोग टाइम इंक्रीज कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, in the y-axis we can see the velocity is also increasing. In the last section we studied that the area under the velocity time graph will give displacement. इस केस में भी area under the velocity time graph will give displacement. So how we will find out the area? Let's take two time intervals t1 and t2. This is t1 and this is t2. Okay, and these are the point A, this is point B, this is C, D and E. So area under graph is equal to area of trapezium A B C D E। ट्रेपीजियम का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है।
or we can also say that area of triangle ABC plus area of rectangle CDEA. This will give displacement. So for uniformly accelerated motion, velocity time graph is a straight line. For uniformly accelerated motion, velocity time graph is a straight line. Now, if the motion is non-uniformly accelerated, in that case, what will be the velocity time graph? For non-uniformly accelerated motion, velocity time graph can have any shape. For example, here in the y-axis, we are taking velocity, and in the x-axis, we are taking time. Look at the graph. First, the object is accelerating. After some time, at point A, the point starts to deaccelerate. Speed is decreasing. स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डीएक्सेलरेट कर रहा है. फिर पॉइंट बी पे आने के बाद फिर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है. सो फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इन विच हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ for uniform motion, the distance time graph will be straight line like this. This is distance and this is time. For uniform motion, this is for uniform motion. For non-uniform motion, the distance time graph will be like this or this. It can be anything. Similarly, velocity time graph. In velocity time graph, if the object is at uniform velocity, then if the object is in uniform motion, that means the velocity is constant, then our velocity time graph will be like this, in which the velocity does not increase. If it is accelerated motion, then the velocity time graph will be like this or in any shape as shown above. Thank you.